Hi students, good evening. It's late. It's late in the night. It's 10:38. I'm sorry for being 8 minutes late. First of all, there was some technical glitches. The audio was not working properly. That's why I'm 8 minutes late. I hope you all will pardon me for it. Good evening and welcome to the Legal Game presented by Unacademy. As the name of this channel, this platform is itself suggesting that we at Legal Game aims to make the learning as interesting as a game. Yes, from a child to an old aged person, सभी के लिए गेम सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है. बचपन में हमें भाग दौड़ के खेल पसंद होते हैं. बुढ़ापे में इन द ओल्ड एज वी लव टू प्ले चेस, वी लव टू प्ले ludo. I have seen a lot of old age people who enjoys games. So yes, games are the most interesting things of our life. एंड यस, गेम्स जितनी इंटरेस्टिंग आपकी लर्निंग को बनाने की इंटेंशन के साथ वी हैव लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म द लीगल गेम, द बेस्ट, द लीडिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म on YouTube, available anywhere for your law entrance examinations. Let's start with today's energetic and very important class, Know Your Constitution Part 1. Remember, Part 2 is going to be live tomorrow at 9 a.m. in the evening on the Unacademy app. पार्ट 2 का डिस्क्लेमर भी मैं आपको पहले ही दे देता हूं. So yes, let's start the class, and before starting the class, just let me switch on the live chats. Yes, जब तक live chats start होती हैं, let's start, or just give me two minutes to switch on the live chats. Yes, guys, finally the live chat is on my screen. Hi Soham, hi Tresik, good morning. सुबह या शाम को सर? ट्रेसिक शाम को, सॉरी सुबह को. 9 AM is in the morning. कल सुबह 9 बजे अन अकेडमी ऐप पर इसका पार्ट 2 होगा. सो यस, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1. किसी भी चीज को जानना है अगर, तो उसके पास्ट को जानना बहुत जरूरी होता है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सम पर्सन, अगर आप किसी इंसान को भी समझना चाहते हैं तो आपको उसका पहले पास्ट समझना पड़ेगा. पास्ट मीन्स द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. यस, part 1 and part 2 are all about the historical backgrounds. There are 5 different phases. उन 5 phases को हम दो अलग अलग सेशंस में पढ़ेंगे. So let's start with the class. Yes, although you all are much familiar with me now, but still, let me give you a short intro of myself. I'm Sarthak Sharma. I have more than 2 years of teaching experience. Let me give you a short brief of myself. I have mentored more than 10,000 students, and under my companionship, under my mentorship, a lot of students have emerged as rankers in the top law entrance examinations of this nation. I hope you all are also going to do the same thing. आप लोग भी रैंकर्स बनने वाले हैं in these entrance examinations. You can join me on Telegram. The link of the Telegram group is in there in the description box. Sarthak Sharma, the legal game is the name of the Telegram group. You can join this group because here I will discuss the homework. I will obviously, whenever it would be required, I will give you homework and class notes. I will share the schedule of my classes, and above them all, I will answer your doubts. If you have any doubts, you can just ask that doubt in the Telegram group, in this Telegram group, and I will definitely personally adhere to it. You can subscribe to an academy for either of the following term, for 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, whichever is proper for you, whichever is a better choice for you. You can go for the subscription. Once you have a subscription, you have the doorway to enter the super courses of an academy. SRT10 is the code which is going to do a big, which is going to going to give you a better discount, an extra 10% discount, extra 10% discount. And yes, if you do not want to pay in lump sum, there is no cost EMI as well for 6 months and above subscription. So start paying in installments if you do not want to pay in lump sum. Hi sir, which book is best for DU LLB entrance? नबीउल अंसारी पूछ रहे हैं. Okay, for DU LLB entrance अगर आपको कोई book purchase करनी है, although all the books are almost similar, फिर भी I will suggest you Singles. Singles publication की एक अलग से DU law entrance के लिए book आती है. You can go for it. Okay. So students, let's have a look over the features of an academy. These 6 are some among a lot more unique features. बहुत सारे features हैं an academy के. An academy starts with U. U stands for unique, uniqueness.
So these six are some unique features. There are a lot more unique features. सभी features को एक साथ screen पे showcase नहीं किया जा सकता है. So these six are the top-notch unique features of an academy. The live quiz feature is my personal favorite. You know the reason. Because in this feature, you can not only participate in a quiz, at the same time, you can host your own quiz as well. So start hosting the quizzes and share your knowledge. Knowledge is the only thing that multiplies when you share it. चलिए ज्ञान को बांटिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. Weekly tests. I hope you are appearing for both of them. Every alternate Saturday we come up with the Unacademy Law Aptitude test at 11 a.m. in the morning. 60 minutes, 60 questions and 60 marks exactly on the latest CLAT pattern. And the weekly T20 test makes a big difference. Okay, it's a quick 20 minutes revision test for your everyday practice. Every weekday, Saturday and Sunday तो weekends होते हैं. So for every weekday, Monday to Friday, there are 5 different weekdays and there are 5 different sections. हर एक weekday में एक particular section का एक particular subject का आपका revision test होता है just to boost and build your consistency. Yes, weekly T20 test came up on the theme of World T20 when recently World T20 was going on and we were hoping that Team India bring the trophy home, but वो नहीं ला पाई. But उतना ही hope था कि आप उतना hope है था नहीं अभी भी है that you are going to bring your trophy home और आपकी ट्रॉफी तो सिर्फ ये है ऑल इंडिया रैंक वन. इस ट्रॉफी को जीतने के लिए कंसिस्टेंसी मैं बार बार कहता हूँ बहुत जरूरी है. कंसिस्टेंसी बनाने के लिए ये वीकली T20 टेस्ट हमने स्टार्ट किए. इट इज ओपन फॉर एवरीवन, so even the students who are not the paid users, they can also go for it. पब्लिशर का नाम बता दीजिए सर. पब्लिशर का नाम मैंने बताया तो आपको. सिंगल्स लॉ पब्लिकेशन इज द नेम ऑफ द पब्लिशर. नबीउल जी. Special class features. It is not a special class. Special classes are free classes on Unacademy. These are free classes on the Unacademy app. And special class platform is a better platform when we compare it to YouTube. Why? Because on the app, these features, you can experience these features. And these features gives a better learning experience. So yes, that's why I've always said this thing that you should join the special classes. Okay, let's start with the class. So as I told you that in this Know Your Constitution, we are going to understand the historical background of the Indian Constitution that started from 1600. 1600 में अंग्रेज हमारे देश में आ गए और 1950 में फाइनली हम गणतंत्र हो गए. वी बिकेम रिपब्लिक. जनतंत्र और गणतंत्र दोनों ही हो गए. जनतंत्र मीन्स डेमोक्रेटिक, गणतंत्र मीन्स रिपब्लिक. सो ये जो फेज था फ्रॉम 1600 टू 1950, हाउ मेनी इयर्स? 350 ईयर्स. ये 350 ईयर्स के बीच कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज आए, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए जो हमको जानना जरूरी है. We are going to discuss these 350 years, the whole story of these 350 years in just 2 classes. And I have discussed, and I have, first of all, I have broadly classified this whole phase in 5 parts. 1600 से 1765 तक ये पहले 165 years थे ब्रिटिशर्स के हमारे देश में. The first 165 years, okay, in which the Britishers were just expanding their rule. इन पहले 165 साल में in the initial 165 years, the Britishers were expanding their rule in from 1600 to 1765. 1765 से 1858 के बीच ब्रिटिश रूल बिगिन होना शुरू हुआ. ओके, 1858 to 1919 एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड द स्टार्ट ऑफ क्राउन रूल. 1857 रिवोल्ट इसमें बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है. देन द फोर्थ फेज वाज 1919 टू 1947. दिस फेज वाज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आए, कैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए. Everything we are going to discuss in it. And then 1947 to 1950, the framing of the Indian Constitution. So yes, we can divide this 350 years into these 5 phases. हम इन 5 फेज में डिस्कस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस all these 5 phases in detail, and I'm going to discuss all the important incidents that happened, most important incidents that happened during these phases. Clear, guys? I hope I am clearly audible. There is no network issue. Can you just affirm me? मेरी आवाज तो नहीं चली गई है? Okay.
आई होप मेरी आवाज नहीं गई है, आई कैन जस्ट होप। चलिए, yes. So historical background of the Indian Constitution can be divided into five different phases, and in these phases, the first two phases are going to be discussed today. Means 1600 से लेके 1858 तक का फेज हम आज डिस्कस करेंगे, एंड द रिमेनिंग थ्री phases from 1858 to 1950 we are going to discuss in part 2 tomorrow at 9 a.m. in the morning on Unacademy app. Unacademy के ऐप पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड फेज, जिसका लिंक आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा, एंड द लिंक ऑफ माय प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओनली. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. So everything started. As I told you that in today's conceptual interaction, we will cover the first two phases, that is 1600 to 1765 and 1765 to 1858. And 1858 onwards, we will discuss in part 2. चलिए क्लास के साथ शुरू करते हैं. So yes, we all know that the Britishers came to India as traders. ये लोग आए traders की तरह, and later on they became the rulers of this nation. Okay, so the Britishers came to India in 1600. We all know as traders in form of East India Company. East India Company हमारे देश में आई थी. The name of this company is itself suggesting कि क्यों आए थे. It was a company that came to East India to trade. But इनको ट्रेड करने की पावर यहाँ पर किसने दी थी? The company secured its charter, the first charter. I hope you know कि चार्टेड प्लेन्स आप लोग बोलते हैं. चार्टेड प्लेन्स क्यों बोला जाता है? ओके, बिकॉज चार्टेड प्लेन्स केम इस चार्टर से ही आया. इट इज द रूट वर्ड. जो इंग्लैंड की क्वीन थी, उन वो जिसमें ट्रेवल करती थी उसको चार्टर बोला जाता था. तो चार्टेड प्लेन इज अनदर वर्ड फॉर इंग्लिश प्लेन्स. सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है. नबीउल जी, स्क्रीन ब्लर हो रहा है तो उसका एक मैं आपको उपाय बताता हूँ. आप स्क्रीन रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लीजिए. स्क्रीन रिजोल्यूशन देयर टू डॉट्स इफ यू आर वाचिंग द क्लास ऑन द मोबाइल फोन, तो फिर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको तीन डॉट्स मिलेंगे, वहां पर क्लिक कीजिए एंड जस्ट इंक्रीज द रिजोल्यूशन ऑफ द वीडियो. रिजोल्यूशन को आप 144 या 240 पिक्सल से बढ़ा के 480 पिक्सल या फिर 720 पिक्सल्स कर दीजिए. स्क्रीन ब्लर नहीं होगा फिर. ओके, सो यस, चार्टर ऑफ 1600 वो पहला चार्टर था, ऑफिशियल चार्टर. चार्टर मतलब शाही खत और शाही पैगाम यू में से. ये क्वीन का चार्टर था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी किया इन इंडिया. इंडिया में उनकी जो पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो दिया. एंड देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू शुड नॉट मिस. वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था? दिस चार्टर ग्रांटेड द कंपनी अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट. ईस्ट में ट्रेड की पूरी मोनोपोली मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को. ईस्ट मीन्स नॉट ओनली इन इंडिया जो कि ब्रिटिश इंडिया था एट दैट टाइम. बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वर पार्ट ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अफ्रीका में भी मोनोपोली ऑफ ट्रेड मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को. इट ऑल्सो गेव द अथॉरिटी टू कंपनी टू कीप आर्म्ड नेवल फोर्सेस. क्योंकि कंपनी कहां से ट्रेड करती थी? कंपनी इंडिया में आती थी समुद्र के रास्ते. सो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी अपनी नेवल फोर्स भी रख सकती थी. यस, सो रिमेंबर, सबसे पहले जो आर्म्ड फोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में रखी वो नेवी थी. रिमेंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है. नेवी, द फर्स्ट आर्म्ड फोर्स that was made by company in India was the armed naval force, नेवी. ओके, और उनको नेवी रखने की परमिशन 1600s में ही मिल गई थी. अभी उन्होंने कोई रूल शुरू नहीं किया है. दे वर जस्ट कमिंग एज अ ट्रेडर्स, बट ट्रेडर्स अपने लिए बॉडीगार्ड्स रखते हैं ना. सो यू कैन जस्ट से दैट दिस आर्म्ड नेवल फोर्स वाज द bodyguard, was the guard of East India Company. So yes, the first settlement of the company, ये क्वेश्चन काफी बार आया है, that where was the first settlement of the East India Company. So the first settlement of the company was at सूरत in 1612. ये लोग सूरत में सबसे पहले इन्होंने सेटलमेंट बनाया, and this settlement was established as a result of a royal फरमान. रॉयल फरमान उस टाइम पे कौन थे? At that time India was under Mughal rule. इंडिया वॉज अंडर मुगल रूल, एंड 1612 में एम्परर थे जहांगीर. सो एम्परर जहांगीर ने एक रॉयल फरमान दिया जिसमें कि उन्होंने कुछ लैंड दी कंपनी को और कुछ अदर कंसेशंस दिए.
और उस लैंड पे कंपनी का इंडिया भारत की जमीन पर, हमारे देश की सरजमीन पर पहला सेटलमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट सूरत दे सेटल्ड इन 1612 बाय अ लैंड दैट वाज ग्रांटेड टू इट बाय एम्परर जहांगीर थ्रू अ रॉयल फरमान। जैसे क्वीन का चार्टर होता था, वैसे ही हमारे मुगल एम्परर का फरमान होता था। वो था सेम थिंग। इंग्लैंड में चार्टर, इंडिया में फरमान। ओके। देन कंपनी ने अपनी थोड़ी रीच और बढ़ाई। आफ्टर 1612 दो और बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट थे। आफ्टर 1612 1639 में मुसलीपट्टनम में, मद्रास में सेटलमेंट हुआ। एंड देन हरिहरपुर इन 1690। हरिहरपुर वाज इन बंगाल एट दैट टाइम, महानदी डेल्टा पे था, विच इज इन प्रेजेंट डे उड़ीसा राइट नाउ, एंड एट दैट टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ बंगाल। तो इसीलिए कंपनी ने तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स चुने। हियर इट वाज, हरिहरपुर वाज हियर in at that time it was in Bengal, so that's why company got। एंड सूरत, सूरत बॉम्बे के काफी पास है। सूरत इज ऑन बॉम्बे बॉर्डर। अभी भी आप सूरत देखेंगे, सो वेयर इट इज, गुजरात एंड बॉम्बे व अब सेम स्टेट। गुजरात और बॉम्बे, पहले गुजरात नहीं था, सूरत वॉज इन बॉम्बे ओनली, क्योंकि महाराष्ट्र एंड गुजरात एक सिंगल स्टेट ही हुआ करते थे। लेटर ऑन वो दोनों डिवाइड होके दो अलग स्टेट्स बने। सो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स सूरत वॉज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो अब समझ में आया कि क्यों कंपनी ने तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास को चुना। बिकॉज उनका पहला सेटलमेंट हुआ बॉम्बे में, सूरत वॉज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे। सेकेंड सेटलमेंट हुआ मुसलीपट्टनम इन मद्रास, एंड थर्ड सेटलमेंट हुआ हरिहरपुर इन बंगाल। दैट्स व्हाई they got the three presidency towns as Bombay, Madras, and Bengal. I hope you are clear till here. Good night, Vijay ji. If you are clear till here, तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज प्रेसिडेंसीज, जिन प्रेसिडेंसीज की मैंने बात की, इन बॉम्बे द फर्स्ट सेटलमेंट वॉज एट सूरत, इन मद्रास द फर्स्ट सेटलमेंट वॉज एट मुसलीपट्टनम, एंड एट इन बंगाल द फर्स्ट सेटलमेंट वॉज एट हरिहरपुर। ये याद रखिएगा, रिमेंबर दिस थिंग। The three settlements, the first three settlements of the company in three presidency towns में ही थे। That's why these three presidency towns later on became the heart of their rule. So यहाँ की जो presidency, इन presidency towns में जो administration था, how the administration worked. So it was carried on by president and a council composed of the servants of the company. It was like it. Queen Elizabeth what was at the top. क्वीन एलिजाबेथ के नीचे आती थी जनरल कोर्ट। जनरल कोर्ट के नीचे, अंडर द जनरल कोर्ट, सबॉर्डिनेट टू इट वाज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सबॉर्डिनेट गवर्नर थे, गवर्नर के सबॉर्डिनेट डेप्यूटी गवर्नर। देन कंपनी 24 कंपनी डायरेक्टर्स एंड 7 कमिटीज वर अंडर इट। I will explain the whole diagram later on. In a later part, I'm going to discuss the whole diagram and the whole administration of the company. Yes, let's discuss some important details of चार्टर ऑफ 1600। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉज डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहला चार्टर 1600 में ही आया था, जिसने कंपनी को इंडिया के अंदर मोनोपोली भी दी थी। सो इट वाज द फर्स्ट चार्टर एंड इट वाज मेनली डिजाइन फॉर ट्रेड इन ऑर्डर टू मीट कंपटीशन विद पोर्टुगीज एंड डच। पोर्टुगीज एंड डच ऑलरेडी आ गए थे इंडिया में उस टाइम पे। डू यू नो इंडिया को किसने डिस्कवर किया? इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डा गामा। ओके, इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय वास्को डा गामा एंड ही वॉज अ पोर्टुगीज। वो पोर्टुगीज थे। पोर्टुगीज एंड डच वर ऑलरेडी ट्रेडिंग हेयर। सो इनसे इनको के कंपटीशन को मीट कराने के लिए और मोनोपोली देने के लिए कंपनी को चार्टर ऑफ 1600 दिया क्वीन एलिजाबेथ ने। सो चार्टर ऑफ 1600 लेड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ऑल्दो इट लेड फाउंडेशन बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर्स भी कंपनी को दी गई, जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। Although at that time no one ever dreamt this thing कि इंग्लैंड इंडिया पर राज करने वाला है। इंडिया इज गोइंग टू बी अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स ने भी नहीं सोचा था। दिस चार्टर जस्ट परमिटेड टू ट्रैफिक एंड यूज ट्रेड मर्चेंडाइज।
and to assemble themselves in any convenient place. To make reasonable laws बनाने की तो powers दी गई, but in context of its business only, nothing else. ईस्ट इंडिया कंपनी को रीजनेबल लॉज बनाने की पावर भी दी गई. द फैक्ट्रीज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ फैक्ट्रीज भी एस्टेब्लिश की अंडर द चार्टर. फैक्ट्रीज वर गिवन पावर टू मेक रीजनेबल लॉज एंड ऑल्सो टू इम्पोज पनिशमेंट. फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई फैक्ट्री का लेबर या कोई पर्सन कोई भी पर्टिकुलर इलीगल एक्ट कर रहा है, सो दैट पर्सन कैन बी punished, even punished. What were the important provisions of Charter of 1600? So मैंने कुछ important provisions extract out किए, इनको note down कर लीजिएगा. According to this charter, ईस्ट इंडिया कंपनी की लाइफ सिर्फ 15 साल की थी. The company was to have a lifespan of just 15 years. The charter could be revoked on 2 years notice. इस चार्टर को रिवोक भी किया जा सकता था 2 साल के एडवांस नोटिस पे. एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स वर गिवन टू कंपनी. कंपनी के अलावा कोई ट्रेड नहीं कर सकता था. एंड वन मोर थिंग, दिस चार्टर प्रोवाइडेड the power to trade in India, in the whole Asia, in Africa and also in America. इन चारों जगह, इंडिया में, एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिका में. इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ एशिया ओनली. ओके, इन चारों जगह पर ट्रेड करने की ज्योग्राफिकल लिमिट्स की पावर दे दी थी इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को. विदाउट अ लाइसेंस फ्रॉम कंपनी, नो ब्रिटिश सब्जेक्ट कुड कैरी ट्रेड इन इंडिया. कोई भी ब्रिटिश कंपनी या कोई भी ब्रिटिश पर्सन बिना लाइसेंस के, मींस लाइसेंस रूल तो यहीं से आ गया. 1600 चार्टर ने फर्स्ट टाइम लाइसेंस रूल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. विदाउट अ लाइसेंस कोई भी ब्रिटिश कंपनी या कोई भी ब्रिटिश पर्सन कैरी नहीं कर सकता था ट्रेड इंडिया में. अनऑथराइज्ड ट्रेडर्स वर लायबल टू फॉरफीचर ऑफ शिप्स एंड मर्चेंडाइज. ब्रिटिशर्स किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रेडर की शिप्स को फॉरफीट कर लेते थे, मतलब उस शिप को सील कर लेते थे. The affairs of the company were to be conducted by all democratic lines. So these were some provisions of Charter Act of 1600. What were the importance of this act? इस एक्ट की इंपॉर्टेंस ये थी कि इंडिया में भले ही एक छोटा सा कदम था ये लेजिस्लेटिव पावर्स का, बट यस, लेजिस्लेटिव पावर्स वर गिवन टू द ब्रिटिशर्स. ऑल्दो लेस, बट यस, स्मॉल स्टेप्स मेक्स अ बिग डिफरेंस, और यही बिग डिफरेंस हुआ. लेजिस्लेटिव पावर्स आई. ऑल्दो इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थी. शॉर्टकमिंग्स यही थी कि लेजिस्लेटिव पावर्स बहुत लिमिटेड थी. लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स जो बाद में बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दी गई. एंड अपनी टेरिटरी को गवर्न करने की कोई भी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट ऑफ 1600 नहीं देता था. दीज वर द शॉर्टकमिंग्स. नाउ आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1660, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, चार्टर एक्ट ऑफ 1661. During the year of 1661, Charles II, who was the king at that time, he issued a new charter. What did this charter did? This charter increased the authority of the company. Okay, under this charter, the company can keep away and exercise power and command over its fortress. अब fortress क्या है? किले. हमारे देश में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो किले रखते थे. सिंपली कंपनी भी अपनी एक अलग से एस्टेब्लिशमेंट रहने के लिए, वो अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए रखने लगी, जिसको ये अपनी फोर्ट्रेस कहते थे. फोर्ट्रेस मींस कंपनी का किला. और कंपनी अपनी फोर्ट्रेस के अंदर, अपने उन छोटे छोटे सेटलमेंट्स के अंदर अपने खुद के लॉज रख सकती है, अपने खुद के लॉज बना सकती है. दे कैन गवर्न इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स लॉ एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग. ये पावर चार्टर एक्ट ऑफ 1661 ने दी. सो यस, फॉर द फर्स्ट टाइम the company was empowered to keep away and exercise power and command over its fortress. Charter Act of 1661, the company was empowered to appoint governor and council. Governor and council भी first time 1661 charter से है. Important question. If this thing come to your examination, के governor and council were established under which of the following? The right answer is 1661 charter. सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करने के लिए गवर्नर एंड काउंसिल को रखा गया. द गवर्नर एंड काउंसिल वर गिवन जनरल जुडिशियल अथॉरिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फोर्ट्रेस ओनली. क्लियर? दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1661 gave ईस्ट इंडिया कंपनी पावर टू मेक पीस और वार. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर उनको दी गई. नॉन क्रिश्चियंस के साथ इरेक्ट फोर्टिफिकेशंस. व्हाट डू यू मीन बाय फोर्टिफिकेशंस? वॉल्स. दूसरे
पर्टिकुलर पर्सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बॉर्डर्स भी आप इसे कह सकते हैं, लाइक इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है। ओके, एंड सीज इंटरलोपर्स। व्हाट डज इंटरलोपर मीन्स? घुसपैठिए। घुसपैठिए means a person who enters your territory without any lawful justification. If an Indian enters Pakistan without any passport, तो obviously पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी पुलिस उसको पकड़ लेगी, सीज कर लेगी। सो यस, कंपनी को पावर मिल गई कि अपनी फोर्ट्रेस के अंदर, अपनी फोर्ट्रेस को बाहरी लोगों से प्रोटेक्ट कर सके। कोई इंडियन जो कि अलाउड नहीं है, जो कि एंटाइटल्ड नहीं है, वो कंपनी की टेरिटरी में एंटर नहीं कर सकता था। ओके, द कंपनी was empowered to seize those persons who entered their territory without their permission. The company could erect wall or borders ताकि वो अपने अपने पर्टिकुलर फोर्ट्रेस को बाकी किसी बाहरी एरिया से बचा सकें. So this power was given by Charter Act of 1661 and it was actually a vast power. It also empowered the company to constitute governors council and appoint other officers for their government. I told you this thing कि कंपनी गवर्नर्स काउंसिल जो है वो फर्स्ट टाइम बनाई गई अंडर द 1661 चार्टर. ओके, 1661 चार्टर के अराउंड 50 इयर्स के बाद, 50 साल से भी ज्यादा के बाद, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, चार्टर एक्ट ऑफ 1726. Now, why this charter is so important? So I'm just going to give you a brief genesis of this charter. पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी कंपनी की, दोनों ही कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए तो वो आई ही थी, बट अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी बढ़ने लगी थी. तो एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया, देयर वाज नो कोर्ट इन इंडिया एट दैट टाइम, जुडिशरी नहीं थी. सो बेसिकली कोर्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया गया 1726 चार्टर के बाद से. ऑन मैनी ओकेजन्स there were these things that on many occasions arose when decisions of the courts in India were questioned and contested in British courts. Need to create, so there was a need to create uniform rules and system in corporations in all the presidency towns. जो 3 presidency towns थे वहां पर एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाने की कोशिश की गई. तो ये चार्टर किंग जॉर्ज वन ने, किंग जॉर्ज फर्स्ट ने इशू किया and it introduced uniformity of approach in all 3 presidencies. Uniformity of law and order in the 3 presidencies came from Charter of 1726. लेजिस्लेटिव पावर्स भी कंपनी को दी गई. सो रिमेंबर, लोकल लेजिस्लेचर हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में एस्टेब्लिश किया गया. एक लोकल लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश किया गया फॉर लॉ मेकिंग इन द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स. द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, द गवर्नर इन काउंसिल, इट वाज नॉट गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, वो सिर्फ गवर्नर इन काउंसिल था. हर एक प्रेसिडेंसी का वाज एंट्रस्टेड विद पावर्स टू मेक बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर गवर्नर इन काउंसिल को दे दी गई हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में. दिस 1726 चार्टर फॉर द फर्स्ट टाइम created a subordinate legislative authority in each of the 3 presidency town of India. ये जो लोकल लेजिस्लेचर था, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी. And each presidency town was to have a corporation consisting of, yes, इंडिया में आज भी अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में मेयर हुआ करते हैं. These mayor, this idea of mayor came from 1726. Yes, there is a mayor. So these corporations in each presidency consisted of mayor and 9 aldermen. Now what is this mayor and aldermen? जरा हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. So mayor was the head and he was to hold the position for a year. एक साल के लिए होता था. And was to be continued as alderman thereafter. जो भी इंसान मेयर बनता था वो एक साल के लिए मेयर बनता था और उसके बाद वो एल्डरमैन बन जाता था वापस. मेयर एल्डरमैन में से ही कोई एक मेयर इलेक्ट किया जाता था. एंड हु इलेक्टेड द मेयर? द एल्डरमैन एंड द पर्सन हु इज द आउटगोइंग मेयर, जो कि फिर एल्डरमैन ही बन जाएगा. दोज विल इलेक्ट द न्यू मेयर. ओके, सो बेसिकली मेयर की पोजीशन कहां से आई? 1726 चार्टर से. ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर.
Some changes in judicial system were also there. Charter, this charter ने establish की civil and criminal courts. First time civil and criminal courts अलग अलग. There was a different civil court and there was a different criminal court जो आप CRPC में देखते हैं. So presidency towns में civil and criminal courts for the first time अलग अलग differently established की गई by charter of 1726. This charter constituted a mayor's court for each of presidency town. There was a mayor's court as well. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट भी आजकल होती है ना, डिस्ट्रिक्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट डीएम हैज सम जुडिशियल पावर्स एज वेल, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं. क्लियर. सो दिस चार्टर वाज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लीगल सिस्टम. व्हाई? क्योंकि इंडियन कोर्ट्स के अगेंस्ट अपील भी फाइल हो सकती थी. एट दैट टाइम देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट, सो इन किंग इन काउंसिल, और यू में से प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल वाज इन इंग्लैंड, और उसके उसमें अपील भी आप फाइल कर सकते थे अगेंस्ट द लोकल ऑर्डर्स ऑफ दीज कोर्ट्स. Now, the third law, which is very important, is the Regulating Act of 1773. The name is itself suggesting Regulating Act ने कोशिश की कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की. The first step was taken by British Parliament to control and regulate the affairs of company. कैसे रेगुलेट करने की? So गवर्नर ऑफ बंगाल को, yes, remember this thing, Regulating of Act of 1773 designated the Governor of Bengal as Governor General of Bengal. Means Governor General of Bengal, it means he became superior to all the other governors. कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था बंगाल. बंगाल वॉज फोर्ट विलियम. रिमेंबर, बंगाल वॉज फोर्ट विलियम. सो गवर्नर ऑफ बंगाल, देयर वर थ्री गवर्नर्स, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे. उनमें से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. इट मीन्स ही बिकेम सुपीरियर टू द अदर टू गवर्नर्स दैट वर इन मद्रास एंड बॉम्बे. मद्रास एंड बॉम्बे के गवर्नर के सुपीरियर बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे जब गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था. सो वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज एस्टेब्लिश्ड. एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई. इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आप कनेक्ट कर सकते हैं विद टुडेस कैबिनेट, और यू में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. एग्जीक्यूटिव काउंसिल कैन बी कनेक्टेड विद इट. So Executive Council of Governor General was established. There was no separate legal legislative council. कोई legislative council नहीं थी. Means legislative powers were also given to the executive. Regulating Act का एक important feature यहाँ से हमें पता चला. The governance is in three different organs: legislative, executive and judiciary. But यहाँ पे legislative powers were given to executive only. Yes. Regulating Act of 1773, as I told you, that governors of Bombay and Madras became subordinate to the Governor General of Bengal. He was Governor General. He was superior to the governors of these two presidencies. The Supreme Court was established at now. बहुत जरूरी, इंडिया में पहली बार. ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो न्यू दिल्ली में है, बिकॉज दिस सुप्रीम कोर्ट वाज डिसॉल्व्ड इन 1860 बाय द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट. जब हाई कोर्ट्स आई तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में, तब ये सुप्रीम कोर्ट डिसॉल्व हो गई थी. बट इंडिया में पहली बार सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुई इन 1774 अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इन 74 सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड. Very important question. So the Supreme Court was established at Fort William, that is Calcutta, as the apex court in 1774. Supreme Court भी establish हुई. So remember, the Supreme Court which is at present वो 1774 में नहीं आई, but India में for the first time Supreme Court Calcutta में आई in 1774 under the Regulating Act of 1773. This act also prohibited servants of the company from engaging in any private trade or accepting bribes from the natives. ब्राइबरी वगैरह के अगेंस्ट भी रेगुलेशंस आने लगी इन द 1773 अमेंडमेंट. एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, शुड रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू. अब ये आपको पता है कि बैलेंस शीट्स एंड अपना रेवेन्यू बताना जरूरी है आजकल सभी कंपनीज के लिए. तो दिस रूल केम फ्रॉम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ओनली, बिकॉज अंडर द 1773 एक्ट कंपनी को अपना रेवेन्यू
रिपोर्ट करना ही होगा। आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773, ठीक 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। व्हाट वाज दिस पिट्स इंडिया एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिंग्विश किया बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, क्योंकि कंपनी इन दोनों में ही